Welcome back. In the previous video, we have completed the pectoral region of our upper limb. Moving on in the upper limb, today we'll be dealing with the axilla region. Talking about the axilla region, the axilla is basically the armpit wala region, which you can see basically lies between the upper part of the arm and the chest. Okay. Axilla basically contains, axilla हमारा जो है वो pyramidal in shape है, pyramidal in shape. Our axilla contains axillary vessels, the most important, the brachial plexus and the axillary lymph nodes. Axilla, our axilla is basically pyramidal in shape. Pyramidal in shape hai, so it has an apex, it has an base and four walls. These four walls are basically the anterior, posterior, medial and the lateral wall. As you can see in the diagram, this is our medial wall, which is towards the medial side of the body. This is our lateral wall. Now, this is our posterior wall, which is bluish in color, whereas the anterior wall, जो यहाँ पे है 3D में, ये जो पीछे वाला part है, that is the posterior वाला part, और ये जो आगे वाला part है, that is the anterior वाला part. This forms the apex of the axilla. The apex of the axilla is called as the cervico-axillary canal. The apex of the axilla is called as the cervico-axillary canal. Okay. Now, talking about the boundaries of the axilla, if we see the boundaries, this is the apex wala region. So, medially it is bounded by the outer border of the first rib, anteriorly by the clavicle, whereas posteriorly the scapula. अगर हम बॉडी में इमेजिन करेंगे ये वाला रीजन, पीछे से देखोगे तो यहाँ पे आपका स्कैपुलर बोन होगा, ठीक है। फिर जो है वो यहाँ पे अपना फर्स्ट रिब आएगा, दैट विल बी दी फॉर्मिंग दी एंटीरियर वाला उसका रिलेशन, एंटीरियर रिलेशन, whereas posteriorly the scapula, anteriorly we have the clavicle, whereas medially यार अपना first rib होगा, so the outer border of the first rib. So this will be the relations for the apex of the axilla. Now, talking about the floor of the axilla, that is the base of the axilla. The base अगर हम देखेंगे, I don't have another diagram for it. The base of the axilla is basically directed downwards. The base extends from the, now this is the anterior axillary fold and this is the posterior axillary fold. So base basically extends from the anterior axillary fold to the posterior axillary fold. So axillary folds are nothing but the folds of the skin in which a margin of a muscle is enclosed. So अब तक हमने apex की बात कर ली, apex के relations देख लिए कि anteriorly we have the clavicle, posteriorly the scapula and medially the outer border of the first rib. और बेस के बारे में हमने देख लिया कि बेस जो है that is formed by the skin, superficial fascia and the axillary fascia, extends from the anterior axillary fold to the posterior axillary fold. Coming on to the anterior wall of the axilla, ये डायग्राम से जो है वो relations of the axilla याद हो जाएंगे. Anterior wall अगर हम देखेंगे तो it is basically formed by the pectoralis major, pectoralis minor, and here in between you have the clavipectoral fascia. So this part forms the anterior relations of the axilla. Once again repeating it, anterior wall is formed by the pectoralis major muscle, pectoralis minor muscle and the clavipectoral fascia in between them. मैं clavipectoral fascia already पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ. So I hope that you know clavipectoral fascia till now very well. After that, talking about the posterior wall. Posterior wall is basically formed by the structures like the subscapularis, teres major and the latissimus dorsi. So this region, अब ये अगर anterior है तो ये basically posterior ही होगा. Subscapularis, latissimus dorsi and the teres major. तो ये तीनों muscles जो है वो axilla का posterior relations बनाते हैं. That is the posterior wall. Medially, medial wall जो है वो इसका बनता है upper four ribs से. अपर फोर रिब्स है और रिब्स से हमें पता है अटैच होता है एक मसल, दैट इज द सेराटस एंटीरियर मसल. सो मीडियल इट इज रिलेटेड टू द अपर फोर रिब्स एंड द सेराटस एंटीरियर मसल, whereas laterally it is related to the shaft of the humerus, the coracobrachialis muscle and the biceps brachii muscle. So once again a quick LMR for the
walls of the axilla. If you talk about the walls of the axilla, anterior wall is formed by the pectoralis major, pectoralis minor, and the clavipectoral fascia. Medially, it is formed by the upper four ribs and the serratus anterior muscle. Posteriorly, by the subscapularis, latissimus dorsi, and the teres major. Whereas lateral, it is formed by the humerus bone, the coracobrachialis, and the short head of the biceps brachii. Okay. अगर थियरी वाले पार्ट पे एक बार एक नजर डालें तो एक्सिला फोर साइडेड पिरामिड, इट हैज एन अपेक्स, बेस एंड द फोर वॉल. Apex directed upwards towards the root of the neck. The apex is called as a cervico-axillary canal, directed upwards and medially, is tunicated, corresponds to the oblique passage called as a cervico-axillary canal. Boundaries: anterior में posterior border of clavicle, posterior में superior surface of scapula, और medially lateral border of the first rib. Boundaries देख लो वापस, medially outer border of first rib, posteriorly scapula, anterior में clavicle. Base of the floor directed downwards, formed by the skin, superficial fascia, axillary fascia, extends from the anterior to the posterior fold. Anterior wall वापस देख लो, pectoralis major, clavipectoral fascia, pectoralis minor. Posterior wall, subscapularis, teres major, subscapularis, teres major, latissimus dorsi. Medial wall में हमारे पास अपना rib और serratus anterior, upper four ribs. Laterally, upper part of the shaft of the humerus and the coracobrachialis and the short head of the biceps brachii. ये line diagram है. सो आई होप कि एक्सिला के जो है वो रिलेशंस क्लियर होंगे. उसके बाद कंटेंट्स ऑफ द एक्सिला: एक्सिलरी आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस, वेन एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, इंफ्राक्लेविकुलर पार्ट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस, एक्सिलरी लिम्फ नोड, एक्सिलरी टेल ऑफ मैमरी ग्लैंड एंड द एक्सिलरी फैट. एक्सिलरी टेल ऑफ मैमरी ग्लैंड, जिसको अपन एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस भी बोलते हैं, टेल ऑफ स्पेंस भी बोलते हैं. ओके, सो ये बेसिकली कंप्लीट्स हमारा एक्सिला. जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, अच्छा, आई हैव गुड डायग्राम्स फॉर एक्सिला. सो अ क्विक LMR फॉर द एंटायर एक्सिला अगर हम देखेंगे, सो ये उसका एंटीरियर वॉल, पीछे वाला लाइट शेडेड पोस्टीरियर वॉल, ये लैटरल वॉल, ये मीडियल वॉल. अगर हम अपेक्स के रिलेशंस देखेंगे, एंटीरियर में क्लैविकल, पोस्टीरियर में स्कैपुला, पोस्टीरियर में ये रहा स्कैपुला बोन अपना, और मीडियल में इट हैज द फर्स्ट रिब. अगर हम एंटीरियर वॉल ऑफ द एक्सिला की बात करेंगे तो यहाँ पे अपना पेक्टोरालिस मेजर मसल्स, हाँ ये रहे, पेक्टोरालिस मेजर मसल, पेक्टोरालिस माइनर मसल एंड द क्लैविपेक्टोरल फेशिया. पोस्टीरियरली हमारे पास जो है वो अपना सबस्कैपुलारिस और अपना टेरेस मेजर एंड द लैटिसिमस डॉर्सा. whereas medially we have the subscapularis, whereas medially we have the serratus anterior and the four ribs, whereas laterally we have the humerus bone and the short head of the biceps brachii. And another muscle which we have in the lateral wall is अपना coracobrachialis. So ये हो गया quick revision about the boundaries. अगर हम यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे, this is our posterior axillary fold and this is our anterior axillary fold. So the base extends from the posterior axillary fold to the anterior axillary fold. Contents की बात करेंगे या फिर the neurovascular bundle in the axilla की अगर हम बात करेंगे तो we have the axillary artery, axillary vein and the nerve which forms the content of the axilla, that is basically the infraclavicular part of the brachial plexus. उसके साथ साथ axillary lymph nodes, ये वाला रीजन जो है वो हमारा बेसिकली brachial plexus का है. उसके बाद axillary lymph nodes प्रेजेंट है यहाँ पे. Long thoracic nerve present है, this is a long thoracic nerve. Okay, this is a serratus anterior muscle which forms the medial वाला relations. उसके बाद अगर हम इसकी बात करेंगे, axillary fat होता है. उसके बाद so this diagram very well explains you about the axilla. नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी वो एक्सिलरी आर्टरी पे होगी. एक्सिला जनरली SAQ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछा जाता है. एक्सिलरी आर्टरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट LAQ ऑफ द अपर लिप. सो मेक श्योर आप वो वीडियो डेफिनेटली देखो ही. मैं उसके लिंक डाल दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. अगर आपको एक्सिला से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी, डायरेक्टली DM मी ऑन इंस्टाग्राम, या फिर आप जो है इसका वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी डाउट डाल सकते हैं. विल श्योरली रिप्लाई टू इट. थैंक यू.